Okay, so good afternoon, everyone. Today we'll study economy. Okay, economy. If you see the trend, before that, let me tell you something. कि in preliminary examination, आमे preliminary examination पे target कोर्स mainly crash course पिला माने अछन. तो preliminary examination पे target कोर्स foundation पिला भी किछि अछन. So for the preliminary examination, if you see, the weightage of economy is approximately 8 to 10 questions. So, but what is the most important thing is that most of the economic questions, I would say, if data is not asked with the data pachara honi, most of the economic questions are doable and high yielding. आराम रे कर दे परियो. ठीक अछि. तो preliminary examination crux होची कि you focus on the high yield topics. If you go through the question papers of last 3 to 3 years, roughly I would say 15 onwards भी जदि हम देखिबा ताहले भी they have asked questions from high yield topics जोटा कि exam pa important. Okay, and identifying those high yield topics and revising them is the key. Preliminary examination पाई सेटा ही दरकार. ठीक अछि. And practicing MCQ, conceptual clarity is extremely important. काहेकि concept clear न हेले examination रे you are bound to falter. Economic questions more or less direct questions, बेसी दिमाग लगा दरकार नहीं. यदि बुझिछ आराम से कर दे परिबो. And we will focus on the high yield topics. ठीक अछि. आ जेमति पढेबी, if you have not read anything also, then also you can understand. ठीक अछि. पढिछि पढिनी एसो जिंस मन रो काढ दियो. यदि किछि भी पढना, then also you will understand. Economy is a very easy subject. Unnecessarily people make it difficult. Okay, so easy subject को easy way ही पढ़ेगा. ठीक अछि. जहाँ पढ़ेबी, just make running notes. That will help you for revision. ठीक अछि. And if you read books, जदि आ परे extra बही पढ़िया ପାଇଁ चाहूछ, you can go through Nitin Singhania, you can go through Shankar Ganesh, any book you have promising, जहाँ पढ़िया ପାଇଁ चाहूछ, से topic पढ़दबो. And जहाँ भी मु पढ़ेबी, that will important for OPS तो definitely UPSC ପାଇଁ भी सेति इकोनॉमी रे हे जिवो. ठीक अछि. एक्स्ट्रा कि दरकार हबो नाही. Okay, so my target is to make the things concise and easy. Okay, जेमति कि तमु किसी burden extra हबो. Okay, I will be giving you burden, then there is no point of teaching. ठीक अछि. Okay, so let us start. Let me share the screen. पढ़िच जानिच ए सब जिंस किछि भाबनी. आगु कि पढ़िछि किछि पढ़िनी, किछि बैकग्राउंड नॉलेज दरकार हे पारे इकोनॉमी पई मोर सेटा नाही. डोंट गो थ्रू दिस थिंग्स. ए सब जिंस भाबिबारी नाही. ओके, यदि किछि पढ़िना ताले बहुत बढ़िया. इट इज वेरी इजी टू understand. Okay, just a minute. Acha. Now you all can see the screen, or if there is any issue. Okay, screen is visible. Okay, ठीक है, बहुत बढ़िया. So the name is crash course, but things will not be crash. Okay, we will
read everything with ease. आराम से पढ़िए. अच्छा. From very basics, what do you mean by economy? यदि किसी भी पढ़िनो आराम से बुझिजो किसी व्यस्त होनी. In economy, we give importance to three things. ठीक है, तीनटा जिनिस रे most of the economics game is complete. One thing is economy is the interplay of three things. One is production. Second thing is consumption. Okay. Third thing is capital formation. ठीक है. Economy is the interplay of three things: production, consumption, and capital formation. Okay. The definition कहया को जिबा ताले economy is the collection of activities in a country that includes the following three domains: production, consumption, and capital formation. Production, you all know that you are producing something in factory, in your home. Okay. घरे production है पर, factory production है पर. ठीक है. Startup है पर, जहाँ भी पर. Consumption, production कला माने और अंतर consume करिबो. ठीक है. You are consuming this pen, you are consuming your paper. ठीक है. You are consuming electricity, you are consuming internet. So consumer. तब क्यों products produce करूची? Pen, paper, electricity, internet, कोठे production होची. So production and consumption. Then is capital formation. Okay. Capital formation जदि मैं simple word रे कहबा ताहले it is the accumulation of capital goods. It is the accumulation of capital goods. What do you mean by capital goods? Okay. There are two types of goods. One is consumer goods, another is capital goods. Consumer goods immediately I am biscuit packet anile khaile sarla. Consumer good. Capital good what a machinery. तेरा को संग संग जोने consume कर दूँ. Time लागुच consume करिया पे. तारा wear and tear होची, production होची सेतरो. So capital goods माने durable goods. ठीक अछि. ठीक अछि. Suppose हमें कहबा कोटे इकोनॉमी रे केते कैपिटल गुड्स accumulation होची. Simple word रे बुझौची. तारा extension concept होची capital formation. आउ गोटे concept अछि पढिया. What is capital output ratio? Then आउ गोटे concept अछि what is incremental capital output ratio. कहि देबी व्यस्त होबा. The capital goods माने होची durable goods. इकोनॉमी रे केते net accumulation होची durable good. माने example durable good रे कोन? Suppose मु कहली कि equipments. Okay. ठीक अछि. तो हम कहबे equipment is a durable good. Very good. अच्छा ठीक है. तापर मु कहबी कि tools machine जो tools यूज होची they are also durable goods. ठीक अछि. Then मु कहबी transportation रे जहाँ भी यूज होची they are all capital goods. Okay. So these are capital goods. तो इकोनॉमी रे हमें तीनटा एक्टिविटी को देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन. अच्छा ठीक अछि. एबे एटी कैपिटल यूज होइछि इन द सेंस ऑफ कैपिटल गुड्स. ठीक अछि. आउ गोटे कैपिटल अछि फाइनेंशियल कांसेप्ट जोटा हम इन्वेस्टमेंट कोच कैपिटल फाइनेंशियल कैपिटल. ठीक अछि. दैट कैपिटल इज डिफरेंट. ओके. ए केस रे आउ गोटे कांसेप्ट हमें देखि दबा एका सहित व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल आउटपुट. Capital output and what do you mean by capital output ratio. Okay. Our concept देखिए what do you mean by incremental capital output ratio. गोटे स्पेस छाड़ था यदि रेंज मु तुमको लास्ट रे कहबी. What do you mean by capital output ratio? What do you mean by incremental capital output ratio? UPSC रे concept already test ହେଇଛି. ठीक अछि.
कैपिटल हम बुझले कैपिटल गुड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गुड्स अक्युमुलेशन ओके आ गोटे फाइनेंशियल कैपिटल भी हम जानले ओके तो हम जानिबा कैपिटल आउटपुट रेशियो कोन तापर हम जानिबा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कोन स्पेस छाड़ था अच्छा ठीक अछि तो हम जानले कि इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन हो ठीक अछि अच्छा देन हम जानिबा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी anybody of you can say ki if you know two types okay what are the two types of economy macro and micro that is the division of branches branches of economy you can say I am telling about types of economy okay types what are the types of economy one is market economy tapare next market economy tapare state economy ठीक अछि state economy or non market economy okay then there is mixed economy okay what are the basic concept that differentiate between the three market non market and mixed anybody गोटे इकोनॉमी को जो थी इकोनॉमी कंप्लीटली मार्केट बेस्ड ही थी वो व्हाट डू मीन बाय मार्केट मार्केट डिमांड और सप्लाई ऊपर डिपेंड डिमांड सप्लाई पर डिपेंड कर जो ठीक अछि देन आउ की कोन कहयो मार्केट इकोनॉमी माने जो को ट्राई से दूसरे गवर्नमेंट इंटरफेयर कर कोन ठीक अछि त द बेसिक बॉटम लाइन हो छी कि there is unrestrained competition between government and private players okay this is the basic thing okay? unrestrained or unregulated जहाँ भी कोई परिवो competition between government and private players ठीक अछि मार्केट इकोनॉमी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो that is a consequence of market economy but what defines market economy market economy is defined by unrestrained or unregulated competition between the private players and public entities तो से unrestricted competition हबो कोन मेनली कोन पई unrestrained competition हुए unrestrained competition दरकार mainly to for the regulation of production and price माने गोटे गुड इकोनॉमी रे केते प्रोडक्शन हबो सपोज गवर्नमेंट कहबो कि नहीं इकोनॉमी रे अट्टा तमे एतिक प्रोडक्शन करबो ताट अधिक करि परिबो नहीं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सपोज मु कहबी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तमे एसयूवी मासुकु 10,000 टा प्रोडक्शन हो ताट अधिक हे परिबो नहीं दिस इज द रेगुलेशन ठीक अछि तो मार्केट इकोनॉमी रे एंती किछि भी रेगुलेशन न थाए there is no one to regulate the production and the price सब किछि डिपेंड करे डिमांड एंड सप्लाई ऊपर जदी लोकंकर डिमांड अधिक रहला प्रोडक्शन अधिक हबो लोकंकर डिमांड कमी गला प्रोडक्शन कमी जिवो so there is no regulation but in non market economy there is or state economy can say there is government intervention between or government intervention in this thing regulation of production and price ठीक अछि काहे कि ना गवर्नमेंट देखिला जे इकोनॉमी रे पॉवर्टी अछि अनएम्प्लॉयमेंट अछि मु जदी कंप्लीटली छाड़ देबी प्रोडक्शन मार्केट फोर्सेस ऊपर तो हमें इट गोटे कांसेप्ट बुझीबा व्हाट डू मीन बाय लाइसे फायर ओके लाइसे फायर कांसेप्ट कोन तो जदी हमें देखिबा जे सब गवर्नमेंट देखिबा सब किछि मु जदी छाड़ी देबी प्रोडक्शन फोर्सेस ऊपर तो लोक मानन को बेसिक जिंस भी न मिल पारे सेति इंटरवेंशन इंपोर्टेंट
ओके तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन रहला प्रोडक्शन और प्राइस डिटरमिनेशन मिक्स्ड इकोनॉमी कोन you know mixed some activity some productions are controlled and rest productions are late to be regulated by market activity okay किसी production control करा जाए किसी production को market activity regulate करे ठीक अछि and government intervention is allowed in limited sectors government intervention in limited sectors okay ठीक अछि complete government intervention no so this is the types of economy market economy non market economy and mixed economy mu tum kon कहली कि there is something some concept called as laissez-faire माने कौन here the z is silent okay laissez-faire जेमिति पढ्छ पढ छि गवर्नमेंट रे इंटरवेंशन कम रहिबो गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन कम रहइबो तो who was the man behind this concept of laissez-faire की कहथिले त laissez-faire meaning कौन laissez-faire meaning होची ଗୋଟେ फ्रेंच टर्म laissez-faire meaning होची leave alone एकटा छाड़ दियो okay no need to intervene okay ता माने होची the market forces will determine the production and the prices what are these market forces तमे का market forces माने कौन market forces will determine the production and prices what are the market forces कौन first market force is the supply म कहले demand and self interest supply demand and self interest these all determine the production and prices ठीक अछि तो this means leave alone okay ठीक अछि सेल्फ इंटरेस्ट रे कोन जीवो सेल्फ इंटरेस्ट कोन जाय पारे सपोज मु कहली कि मु गोटे बिजनेस तैयारी करिया चाहू छी जो थरे कि मु सब कॉपी तैयारी करके मार्केट रे बिकी खाता तैयारी कर बिकी ठीक अछि तो मु देखिली कि मु जो एरिया रोज से बहुत डिमांड अछि आउ सेठी जोटा मार्केट रे जो कॉपी मिलु छी तार रेट होची 20 रुपीस तो मु कोन करली मु तो 15 रुपीस कर देली कर दे कि बिकली काहे कि मोर सेल्फ इंटरेस्ट होला कोन कि मोर कॉपी रो रेट कम हेले मोर अधिक सेलिंग हो नो वन इज देयर टू रेगुलेट तुम की कहयोनी व्हाई यू आर ब्रिंगिंग डाउन योर प्राइस टू 15 रुपीस व्हाई नॉट 20 रुपीस समस्त मार्केट रे 20 रे बिकुचंती तमे कहीं 15 रुपीस रे बिकुछ बिकॉज़ दिस माय सेल्फ इंटरेस्ट इज इन्वॉल्वड कि मु केमती प्रॉफिटेबिलिटी मोर वेंचर को करी आर यू गेटिंग मी और नॉट आगे सर yes no one is there to tell ki why you are producing so much why you have priced so much so your self interest also depends on the supply demand etc ठीक अछि so this is the concept of laissez-faire okay ठीक अच्छा तो economy रे what are the major players okay economy रे major players are the government business and household okay I think जदि इयरफोन यूज करिवो बेटर हो काहे ना अदरवाइज अनम्यूट करले वॉइस आस जाउछ ओके इयरफोन लगाले बेटर हो so these are the three players in the economy government business and household okay and mainly these are the three players जो माने ही इकोनॉमी रे मेजर पार्ट प्ले करंती आउ किछि एक्सटर्नल एस्पेक्ट भी अछि सपोज मु कहबी इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट
बाहर आसुची कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाहर आसुची इकोनॉमी रे आसी एंट्री करूची ओके तो बट मेजर इंटरेक्शन इज बिटवीन हाउसहोल्ड एंड बिजनेस ओके हाउसहोल्ड माने कौन करती बिजनेस मान कौन दरकार प्रोडक्शन दरकार हाउसहोल्ड माने होचंदी कंज्यूमर ठीक अछि तो हाउसहोल्ड माने प्रोवाइड करती व्हाट द बेसिक नीड्स ऑफ इकोनॉमी इज कैपिटल कैपिटल इन द सेंस फाइनेंशियल कैपिटल ओके लेबर हाउसहोल्ड माने कोनी केवल घर नुह ऑल द पीपल जो माने कि अछंती समस्त को हम हाउसहोल्ड कहू कैपिटल प्रोवाइड करती लेबर प्रोवाइड करती देन मोर लैंड नहीं मु गोटे फैक्ट्री करने पे चाहूची लैंड को लीज रे नहीं जीवी ठीक अछि लैंड प्रोवाइड करती एंड एंटरप्राइज से माने काम भी करती ओके ठीक अछि सपोज एंटरप्राइज में कह बड़ बिजनेस गोटे अच्छे सी कौन प्रोडक्शन सब कर सी कौन कर छोट छोट बिजनेस को सब आउटसोर्स करदे देख मुझे बड़ गाड़ी तैयारी करुच्ची चक तुम तैयारी कर ड्राइव हमर स्टीयरिंग तुम तैयारी कर सीट तुम तैयारी कर ओके तापर आसे असेंबल ले जिवो ठीक अछि देन बिजनेस तम कौन दिए यदि कैपिटल देला लेबर देला लैंड देला एंड एंटरप्राइज देला ओके लेबर देले तब कौन दबो वेज दबो ठीक अछि देन कैपिटल देले तब प्रॉफिट दबो पड़ियो लैंड देले ताकू रेंट बाय इंटरेस्ट ओके इधर प्रॉफिट हे परिबो एंटरप्राइज रे प्रॉफिट हे परिबो जा भी परिबो ओके तो दीज आर द फोर थिंग्स दैट बिजनेस प्रोवाइड द हाउसहोल्ड्स की कैपिट प्रॉफिट वेज रेंट एंड इंटरेस्ट ठीक अछि तो एटा होची प्रोडक्शन साइड देन कंजम्पशन साइड माने प्रोड्यूस बाहरी गला सपोज हमाम सोप ओके हमाम सोप मार्गो सोप तैयारी गला ठीक अछि तो ताको कंज्यूम की करिवो अगेन हाउसहोल्ड कंज्यूम करिवे व्हाट जीव से हाउसहोल्ड पाखु ही जीव ठीक अछि तो माने कंज्यूम कले कंज्यूम करिकी एमाने जहा सब प्रॉफिट पाइथले एटी प्रॉफिट वेज रेंट इंटरेस्ट एमाने ताकू देले केमती एक्सपेंडिचर फॉर कंजम्पशन so this is the production side and this is the consumption side ठीक अछि this is the concept of free market जे फ्री मार्केट हला प्रोडक्शन कंजम्पशन हला ठीक अछि तो आ भीतर गवर्नमेंट कोड आसला तो एटा जोटा रहिला एटा को हमें कहि परिबा जे दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ठीक अछि इधर गवर्नमेंट कोड आसला हमें कह गवर्नमेंट रूल कोन आदरे सब तो प्रोडक्शन कंजम्पशन एपट रहला बिजनेस एपट रहला हाउसहोल्ड सेमान तांको भितरे चलला बट गवर्नमेंट एटी कोन करछि गवर्नमेंट कोन करूछि गवर्नमेंट जल देखिला जे इकोनॉमिक एक्टिविटी गोटे सेक्शन को अफेक्ट करूछि हैम्पर करूछि सेते बेले गवर्नमेंट स्टेप इन करियो सपोज मु कहले गोटे फार्मर गोटे क्विंटल राइस बाहर कला प्रोडक्शन कला ठीक अछि तो सेटा कोन एंटरप्राइज कि नै सपोज फार्मिंग गोटे एंटरप्राइज ओके तो सी यदि प्रोडक्शन कला ताकू प्रोसेस करिया पई बिजनेस माने किनिले ठीक अछि तो बिजनेस माने कोन करिवे से माने समस्ते गोटे कार्टेल करिकी मार्केट रे राइस रो प्राइस को कमे के रखिवे जेमति कि फार्मर को कम पैसा दो पड़ियो सपोज फार्मर रो एक्सपेंडिचर है 3000 रुपीस पर क्विंटल ओके बट से माने कहले जे हमें टोटल समझ मिसी गले कहले हमें एरिया रो राइस क्विंटल टाकू हमें 2000 रो अधिक दबानी
ठीक अच्छे तो हेले कौन फार्मर लॉस से कौन कर मुंडे हाथ दबा आउ नेक्स्ट ईयर ठू आउ चाष करिबो ही नहीं बट गवर्नमेंट स्टेप इन कला गवर्नमेंट कहला जे डिस्ट्रेस सेलिंग आमे करिया को दबु नाही तमे बिजनेस मैन माने मिसी जो डिस्ट्रेस सेल करछो एटा हेई परिबो नाही विल प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस जे जदि भी फार्मर चाहूची सेल करिया पई जदि मार्केट रे तार जति की एक्सपेंडिचर है जति की न मिलुची आमे प्राइस डिसाइड करूछु 3100 टका पर क्विंटल ओके गवर्नमेंट ओडिसा गवर्नमेंट केते परचेज करूचे एनीबॉडी ओडिसा गवर्नमेंट केते परचेज करूचे बे जानना गवर्नमेंट एबे नुवा गवर्नमेंट आसला पर प्राइस हाइक हिची देखिबो हला ठीक अछि फैक्ट 3100 आई थिंक तो 3100 रे हम परचेज करू तो मु डिस्ट्रेस सेल करे दरकार नहीं सो दिस इज द मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट ठीक अछि तो आ पई भी फ्री मार्केट इकोनॉमी रे प्रॉब्लम डब्ल्यूटीओ रे जाई कि अमेरिका कहूची देखो ए माने कोन करूचंदी से माने को फार्मर मानन को सब्सिडाइज्ड माने सब्सिडाइज एग्रीकल्चर से माने को रही होची काहे कि ना माने पब्लिक प्रोक्योरमेंट करूचंदी बहुत पब्लिक प्रोक्योरमेंट करी स्टोरेज करूचंदी ओके तो जोठी फार्मर को 2500 मिलिया कथा एमान दउचंदी 3100 हेले कोन होची अन्य कंट्री राइस हम कंट्री पस करनी जदि भी सेटा कम प्राइस रहला जदि भी सेटा मन कर 3500 तारा प्राइस अछि सॉरी माने 20 मार्केट जोटा आसुची मार्केट को तारा प्राइस सपोज कम भी अछि ओके तो जेहेतु गवर्नमेंट अधिका पैसा दउची ओके तेनु अन्य मानक राइस मार्केट को पसी परनी ठीक अछि दैट होल्ड्स फॉर एवरी अदर प्रोडक्ट्स आल्सो ओके तो तेनु बाहर जने लोक जे नबा को आछि फॉरेन लोक आसला कला मु मार्केट रो राइस परचेज करबी से केते दबो से दे दे कि 3000 दबो किंतु गवर्नमेंट दे दोचे 3100 तो लोक माने सब ताउ दे दोचन ठीक अछि तो से माने कहउचंदी जे दिस इज सम सॉर्ट ऑफ मार्केट डिस्टॉर्शन तमे एते पब्लिक प्रोक्योरमेंट करूचो लोक मानको एते सब्सिडी दोचो जति की डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स अछि सब्सिडी रो ताठू तमे अधिका तमर हे जाउछ ते पई दिस इज ए मार्केट डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी जोटा की अलाउएबल नुह एओए अछि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ओटा अछि डब्ल्यूटीओ तो ए डब्ल्यूटीओ रे फार्मर रिलेटेड इश्यू नै कि ऑलरेडी अमेरिका यूएस भीतर टसल चलछि ओके अमेरिका और इंडिया भीतर टसल चलछि सामे से बन जेबे हमें कहबा कि गवर्नमेंट कोड इंटरवीन करे जोठी देखिले गवर्नमेंट देखु जे गोटे सेक्शन लोक हैम्पर होचंदी गोटे मेजर सेक्शन फार्मर होंतु कि स्मॉल बिजनेसमैन होंतु किंबा एमएसएमई होंतु जो माने कि मार्केट एक्सेस प्रॉब्लम होची किंबा दे आर फेसिंग स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन प्लेयर्स से केस रे गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन आसे ठीक अछि तो दिस इज द सर्कुलर इन फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी ठीक अछि हमें कांसेप्ट बुझिले somebody was telling about microeconomics and macroeconomics let me tell something about macro and microeconomics एठी कांसेप्ट क्लियर कर दवा what do you mean by microeconomics what do you mean by micro anybody इंडिविजुअल लेवल ले माइक्रो हो और लार्ज लेवल large individual level large level Micro. तार एग्जैक्ट मीनिंग होची कि आमे जदी होल इकोनॉमी स्टडी करछे होल इकोनॉमी रे आमे कोन देखि प्रोडक्शन कंजप्शन कैपिटल फॉर्मेशन होल इकोनॉमी स्टडी करछे दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स macro okay broader picture but when we see or we focus on the individual you can write down focus on the individual behavior of economic agent
individual behavior of the economic agent. Economic agent kiye? Who is the economic agent? Consumer. I can be one economic agent, you can be one economic agent. Okay. Farm can be economic agent. Business, industrialist can be economic agent. If you study the individual behavior of any economic agent, गोटे प्रोडक्शन यूनिट भी गोटे इकोनॉमिक एजेंट, जने कंज्यूमर भी गोटे इकोनॉमिक एजेंट, ठीक अछि, गोटे फार्मर गोटे इकोनॉमिक एजेंट. तो जेतले हम इंडिविजुअल बिहेवियर स्टडी करूचे दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक अछि. आउ कि जने दरकार नै सेति मन केति दरकार हेति पड़े और अननेसेसरी अधिक जिंस पड़े किछ फायदा नै. अच्छा ठीक अछि. सो गोटे कांसेप्ट पढ़िया कि लॉ ऑफ डिमांड. ठीक अछि. Let us directly go to the graph. अच्छा. ग्राफ रे गोटे x एक्सिस थाए, गोटे y एक्सिस थाए. ठीक अछि. क्लियर. तो x एक्सिस रे हमनेले प्राइस ऑफ गुड्स, y एक्सिस रे हमनेले क्वांटिटी ऑफ गुड्स. ठीक अछि. If you will see the law of demand graph, it will be like this. This is the demand. Tamane, suppose I will take a single point on this data point only. This is one point and this is one point. At this point, this is the quantity and this is the price. At this is point A, this is point B. At point B, this is the quantity and this is the price. Tamane kon hela? If anything is in short supply in an economy, the price will be more or less. More. Yes. If anything which is in large supply in an economy, the price is more or less. Less. Yes. This is the law of demand. It's as simple as that. But there are some exceptions. ठीक है. There are two types of goods which does not obey the law of demand. ठीक है. Law of demand, you can write the लिखिए भी दरकार नहीं. If the quantity of goods is in excess supply, the price is less, and if the short supply, price is more. Simple एतिकी, आगु कुछ नहीं. Okay. Next, there are two types of goods which does not obey the law of demand. Okay. One is Giffen goods, another is Veblen goods. Okay. Giffen goods and Veblen goods. Giffen goods. Giffen goods रे does not obey माने कौन? Does not obey माने एमानंकर if price increases, demand also increases. हमारा law of demand कौन कहूची? यदि क्वांटिटी अधिका ही गला ताले डिमांड कमी जो प्राइस कमी जो. बट एठी कौन होची? प्राइस बढ़िले लोक अधिका दिया किनिबे. ठीक अछि. बुझे पे कहूची. How you can explain this? Example, story. Economy is all about story. My food basket consists of 100 gram rice,
100 gram chicken and 100 gram vegetables and 20 gram dal. ठीक है अब बोल से लेके क्लियर कर लेके ओके your food basket consists of rice 100 gram, dal 20 gram, chicken 100 gram and vegetable 100 gram. आराम रे डेली तमे खाउछ ठीक अछि इकोनॉमी रे प्राइस राइज हला ठीक अछि डाली रो प्राइस पड़ला चिकन रो प्राइस पड़ला वेजिटेबल प्राइस पड़ला ओके बट ए समस्त भितरु कहार प्राइस सबुटु कम बढ़िबो वेजिटेबल ना चिकन ना डाल ना राइस राइस कहीं की राइस रो सप्लाई ऑलमोस्ट आंको पे अधिक अछि ठीक अछि तो जणे जिते बेले सब जंगर प्राइस बढ़ी गला जणे जण पाखरे 100 टका ही अछि से 100 टका रु से 50 रुपीस रे चिकन आणुतला 20 रुपीस रे राइस आणुतला आउ बाकी आउ 30 रुपीस रे 20 रुपीस रे से वेजिटेबल आणुतला आउ 10 रुपीस रे से डाल आणुतला जाय आणुतला बट प्राइस राइज ले से कोन करबो ता पय चिकन अफोर्डेबल हे रहइबोनी वेजिटेबल अफोर्डेबल हे रहइबोनी डाली किनी परिबो ठीक अछि वेजिटेबल भी किनी परिबो तो से कोन करबो से जो चिकन अफोर्ड करि परिबोनी he will purchase more rice more dal chicken out anyway he has to spend 100 rupees समस्त प्राइस बढ़ी राइस रो भी बढ़ी डाल रो भी बढ़ी भेज रो भी बढ़ी चिकन रो बढ़ी बट चिकन रो प्राइस तो अधिका बढ़ी गला 100 रुपीस सपोज चिकन 150 गले सेटा बहुत बड़ कथा ठीक अछि तो तणु से कोन करिवो चिकन इज आउट he will more concentrate on rice dal veg ता माने आकुसी अधिका नबो ता माने काहे की अधिका किनिला एटा को because no alternate option is available he cannot buy the alternative he cannot buy the chicken ठीक अछि write down given goods write down people consume more when the price rises write down people consume more when the price rises example if the price of rice increase if the price of rice increase people are compelled to buy more rice people are compelled to buy more rice because they are unable to buy other alternatives बुझियला any doubt No, sir. ठीक अछि नेक्स्ट कार के डाउट रहला गिफन गुड रे कार डाउट रहला सुचिस्मिता पढ़ा पढ़ी केम चलछि गुड आफ्टरनून सर चलची सर भलो तो आज्ञा सर सब बुझी होछि क्लास रे आज्ञा सर क्लास रेगुलरली करछो तो आज्ञा सर ठीक अछि तो this is the given good concept then given good आमे डिस्कशन करले राइस दाल सब vegetable and chicken so this is the case with most of the people in the economy हम भला तम भला लोक सब ए ही खाउछे ठीक अछि तो जो माने लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लोक अछंती सेमानक पय एटा एप्लीकेबल राइस इज ए गिवन गुड पोटैटो इज ए गिवन गुड काहे कि ना तार रेट बढ़िले लोक किनी की खाइबे ही खाइबे कारण ता छडा आ कुछ ऑप्शन ही नहीं ठीक अछि देन कम टू बेबलेन गुड
Veblen good यांकोट पर अलगा Veblen good माने होची these are high quality luxury product, right now these are high quality luxury products. These are high quality luxury products. सेतर हुई कोन जे सपोज रिस्ट वॉच सपोज मु कहली कि फास्ट ट्रैक रो रिस्ट वॉच गोटे अछि that cost you around 10,000 rupees, suppose 10,000 rupees. Okay, एमाने गिफेन गुड वाला एमाने 1500 टंका घंटा पिनथुए 1500 टंका टाइटन रो जहां मिलुची नॉर्मल बेसिक वाच कि जो माने टिके हायर इकोनॉमिक स्ट्रैटा रे अछन जे माने हमरा पैसा अधिक अछि 10,000 टंका घंटा पिनथिबे. अच्छा काहे कि ना दे वांट दैट people should watch their watch and तांको कहबे कि आज बड़ घंटा घंटा पिछि पूरा अरिस्टोक्रेट फैमिली रो आछि. More than their requirement, it is related to their social status. तांको रिक्वायरमेंट अपेक्षा एटा रिलेटेड होछि सोशल स्टेटस. एपन तक डाउट अछि फ्रीली इंटरैक्ट हला तो मोर इट इज मोर ऑफ रिलेटेड टू देयर सोशल स्टेटस. काली कोन हला से फास्ट ट्रैक रो प्राइस हे गला 15,000. ठीक अछि सी जीए जो पर्सन ए येस्टरडे गतकाली जे 10,000 देकी से फास्ट ट्रैक घंटा पिंदुथिला सपोज ता घंटाटा पड़ी गोटे भांगी गला. ओके तो सी मार्केट गोला बेलू देखिला कि रेट हे गलानी 15,000. मत तुम कह सीए एठू आसिकी 1500 टंका घंटा किनिबो ना से सेटा को ही किनिबो एनीबॉडी. सर ସେଇଟା କିଣିବ. Yes, he will purchase the same thing because he is not worried about कि मते घंटा पिंदियार अछि एनी घंटा मोर हे जो नाही. He is more related to more worried about his social status. यानी एटा जदि मु न पिंदिबी खाली गले हुए तो लोक मान मते कहबे ई कोन एमते घंटा पिंची. सो एठी जेते प्राइस बढ़िले भी लोक किनिबे ही किनिबे. So Veblen goods are more related to high quality luxury products. साधारण लोगों ପାଇଁ Veblen good नो. ओके ब्रांडेड क्लॉथ जे माने ब्रांडेड जीन्स ब्रांडेड टी शर्ट सब पिनचे से आउ बैक करके आउ चालू जीन्स न पिनथि प्राइस बढ़िले भी से सेटा किनी हेटा भी किनी पिंदियो. ओके सो राइट डाउन आउ गुड इनसो है कि लोक माने भाबंती कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आर बेटर. से गोटे कांसेप्ट है प्रोडक्ट जेते एक्सपेंसिव हबो सेटा सेते बेटर. टू थिंग्स ए जिंस ए दिरा जिंस कंट्रीब्यूट करे कि Veblen good रो काहे कि प्राइस बढ़ले भी लोक ताकू किनंती. ओके मेजॉरिटी पॉपुलेशन कैन नॉट बाय Veblen good. 10,000 दे के जन हंटा पिनचन दुनिया. ठीक अछि and Veblen goods are more related with the status symbol not requirements. ठीक अछि write down the price increase of Veblen goods high quality luxury product लिखिलो. ठीक है ताबले the price increase of Veblen goods compel people to buy more because they think that it is the symbol of their status or expensive products are better. ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଟା ଆଇଦର ମୋର ଷ୍ଟାଟସ୍ ସିମ୍ବଲ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ନିହାତି ଅଧିକା ପଇସା ହେଇଛି ମାନେ ନିହାତି ଭଲ ଥିବ. ଠିକ ଅଛି କାହାର ଡାଉଟ ରହିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର. अच्छा टू थिंग्स दिटा कॉन्सेप्ट कहबी. One is
एंजल कर्व, अनदर इज कुजनेट कर्व। किछि नै खाली मन रख एति किछि कांसेप्ट जानिया दरकार नै जति कहू सेति मन रख ओके सेति के न सेति ही पढुछि परीक्षा आमे कोन इकोनॉमिस्ट होबागी दरकार नै ओके एंजल कर्व एंड कुजनेट कर्व। अच्छा सपोज मु कहली कि you got a job and your monthly income is rupees 40,000 ठीक अछि तो जेतल तुम इनिशियली 40,000 जॉब करिवो तुम बेसिक जिंस सब किनिबो तापर तुम इंक्रीमेंट हला सैलरी बढ़ला हला पर आफ्टर 5 years you got 70,000 सपोज तो 40,000 रे तमे जेती कंज्यूम करूछ 70,000 रे कंजप्शन अधिक हबो ना कम हबो एनीबॉडी ଅଧିକ ହବ। अधिक हबो कंजप्शन ता माने जदि मु एठी लिखिबी दिस इज इनकम एंड दिस इज कमोडिटी ओके दिस इज इनकम दिस इज कमोडिटी द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन काहे कि ना सपोज इनकम मोर 5 रुपीस कंजप्शन होची पार्लेजी बिस्किट पैकेट इनकम मोर 10 रुपीस ओके गुड डे ठीक अछि इनकम 20 रुपीस ब्रिटानिया केक ठीक अछि तो जेते इनकम बढ़िबो कमोडिटी रो कंजप्शन भी सेते बढ़िबो एंड सेते अधिका कंज्यूम करबो ठीक अछि तो you can write angel curve is the relationship between income and consumption of commodity okay that means how much quantity of commodity a consumer is consuming how much quantity of commodity a consumer is consuming at different levels of income कार डाउट रहिला ठीक अछि then another thing is कुजनेट कर्व ओके है ना परीक्षा रे पढिछि कुजनेट कर्व कोन ओके रिलेशनशिप कहा का भीतर कुजनेट कर्व होची तार ग्राफ एमती सपोज एटा हला कॉल एमती ठीक अछि ग्राफ माने ऑलवेज look for the x axis and y axis x axis रे सपोज मुनेली सपोज कोन नबागु तो पड़िबो सेटा रे ही दीटा रिलेशनशिप रे ही कुजनेट कर्व इनकम इनइक्वालिटी एंड x axis रे मुनेली पर कैपिटा इनकम दिस इज x axis दिस इज y axis रे मु इनकम इनइक्वालिटी नेली एंड एठी पर कैपिटा इनकम नेली तो जिस्मिता बुझी होची आज्ञा सर ठीक अछि फाउंडेशन प्ले के जण छटी हां ठीक अछि आउ की अछि फाउंडेशन प्ले रे जस्ट रेज योर हैंड्स ठीक अछि ओके वेरी गुड हला तो मु कहली कि सपोज two countries are there one country is India another country is USA India is a developing country and USA is a developed country okay ing and ed okay developing country and USA is a developed country ठीक है अच्छा मते को जेते बेले कंट्री डेवलप्ड हेई न थाए सेते बेले समस्तंको पाखरे इक्वल इनकम रहिबार प्रोबेबिलिटी अधिका थाए ना कम थाए आउ थरे क्वेश्चन कोच जेते बेले कंट्री डेवलप्ड हेई न थाए सेते बेले समस्तंको पाखरे इक्वल इनकम रहिबार पॉसिबिलिटी कम थाए ना अधिक थाए लेस कम थाए। बस
कॉन्सेप्ट ओवर ता माने डेवलपिंग कंट्री रे इनइक्वालिटी रो चांस अधिका ना कम ଅଧିକ ଅଧିକା बस हल्ला कोन ता माने एठी इनइक्वालिटी बढ़ुची एठी इनइक्वालिटी कमुची एटा इनइक्वालिटी नहीं छे y एक्सिस से जते ऊपर को जिबा इनइक्वालिटी बढ़िबो एठी इनइक्वालिटी बढ़िला एठी इनइक्वालिटी कांस्टेंट ही रहइला एठी पुनी इनइक्वालिटी कमिला ता माने एई पार्ट ऑफ द ग्राफ विल बी सॉरी एई पार्ट ऑफ द ग्राफ विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू डेवलप्ड कंट्री ना डेवलपिंग कंट्री डेवलपिंग यस काहे की ना डेवलपिंग कंट्री रे पर कैपिटा इनकम बढ़िले भी इनइक्वालिटी बढ़े काहे की बढ़े ना हमें इनइक्वालिटी काहे की हुए बिकॉज मोर वेल्थ इज कंसंट्रेटेड इन ए हैंड ऑफ फ्यू बहुत कम लोकों पाखरे बहुत अधिका पैसा रही सेति इनइक्वालिटी हुए किंतु जेते बेला कंट्री डेवलप्ड हे जाए सेते बेले वेल्थ रो डिस्ट्रीब्यूशन टा टिके यूनिफॉर्म हुए जदी इंडिया रे वेल्थ अच्छी सपोज 100 रुपीस टोटल वेल्थ होचे 100 रुपीस रिच लोक माने 70 रुपीस रखछन 5 जण रिच लोक 70 रुपीस रखछन ओके एंड टोटल पॉपुलेशन इज 20 आउ 15 जण पुअर लोक 30 रुपीस रखछन ता माने जण पाखरे एवरेज गले 2 टका टोटल लोक 20 टोटल इनकम 100 तादर 70 जण 70 टका अछि 5 जण पाखरे माने जण का 14 टका लेखा अछि आउ 15 जण पाखरे जो रहले सेमान पाखरे टोटल 30 टका माने जण का 2 टका लेखा अछि तो दिस इज इनइक्वालिटी एटा हो इनइक्वालिटी जे किछि लोकन पाखरे अधिक पैसा अछि आ बहुत अधिक लोकन पाखरे कम पैसा अछि बट जिते बेले दिस द इंडियन सिनेरियो जदी हमें जिबा डेवलप्ड हे कि जिबा नो डाउट रिच लोकन पाखरे पैसा बढ़िबो जा पाखरे 14 अछि ता पाखरे 20 हबो किंतु जा पाखरे 2 थिला सेटा 10 हे जिवो एमती बेर ता पाखरे 20 रो मो पाखरे 20 रो सेमती कदा भी होबनी बट इनइक्वालिटी धीरे धीरे कमिबो तार 14 रा बढ़ी 20 हे पारे किंतु मोर 2 टा बढ़ी के ड्रास्टिकली 10 हे जिवो तापर राइज अधिक कार हैला यार कम पैसा अछि ना तार अधिक पैसा अछि जा कम थिला यस सेटा हुए जेतर डेवलप्ड कंट्री रे इनइक्वालिटी कम थाए धीरे धीरे कम है इनइक्वालिटी जीरो होबनी केबे भी इनइक्वालिटी विल नेवर बिकम जीरो टोटली केबे जीरो होबनी कर्व रे भी तमे देखिबो कुजनेट कर्व एक्चुअली कुजनेट कर्व देखिबो हला इकोनॉमी इज वेरी सिंपल हला अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करले मन रहबनी ओके आउथरे कहि दो आउथरे ग्राफटा कर दो देखो कुजनेट कर्व तमे देखिबो जे एटा जीरो रु स्टार्ट हेतिबो किंतु ए कर्व एटी सरी जइथो केबे भी ये तळकु खसिबो नाही कारण जदि तळकु खसी गला इनइक्वालिटी कोन हे जिवो जीरो हे जीवो जीरो इनइक्वालिटी केबे भी जीरो होबो नाही डेवलप्ड कंट्री रे भी होबनी डेवलपिंग रे भी होबनी इनइक्वालिटी परसिस्ट करिवो बट डेवलपिंग कंट्री रे कोन हुए जेते बेले इनकम बढ़ी बढ़ी जाए एटा मन को इनइक्वालिटी हम देले एठी देले पर कैपिटा इनकम ओके जेते बेले डेवलपिंग कंट्री रे इनिशियली भारत रो स्वाधीनता पर हम चिंता करिवा हमर पर कैपिटा इनकम बढ़िला किंतु सब कोन लोकन पाखरे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हे पहुंचलानी सेति पे इनइक्वालिटी रहला तामाने इनइक्वालिटी बढ़ी बढ़ी चलला किंतु धीरे धीरे आमे त रिफॉर्म कले इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हला डिजिटल इंडिया हला तो लोकन पाखरे डिबिट रे पैसा पहुंचला तो सेमानन को पाखरे धीरे धीरे पैसा बढ़ी बढ़ी चलला हेले कोन हबो गोटे इनइक्वालिटी स्टैग्नेट माने इनइक्वालिटी आस्ते आस्ते बढ़िलानी फ्लैट हे गला तापरे से माने स्टार्टअप आरंभ कले तांकर जॉब निजे वेंचर स्टार्ट कले तो इनइक्वालिटी धीरे धीरे कमिला केबे जीरो होबनी इनइक्वालिटी तो इंडिया जदि हमें देखिबा हमें डेवलपिंग कंट्री हमें ए फेज रे अच्छे धीरे धीरे हमर डेवलप कंट्री हे कि दिबा हमें ए फेज को दिबा तो दिस इज फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी दिस इज फॉर डेवलप्ड इकोनॉमी ओके ठीक अछि एंड दिस एरिया इज द टर्निंग पॉइंट माने एठी गेम चेंज हे गला टर्निंग पॉइंट ओके टर्निंग पॉइंट केते हबो एठी आसी कांसेप्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट जदि हम लोगन को स्किल दबा
जदि हम लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड करें परिवा निजे निजे गोटे छोट वेंचर करके स्टार्ट कले कि गोटे बादाम आनला बादाम चीना बादाम प्रोसेसिंग कला ओके हल्दीराम कंपनी मिक्सचर तैयारी करूची सो सी कौन कला चाषी मान चीना बादाम आनला आनी प्रोसेसिंग करके हल्दीराम कंपनी को डायरेक्ट देला तुम नियो पूरा प्रोसेसिंग अच्छी तुम तैयारी कर बहुत गुड़ा वेंचर हो पार ठीक अच्छे तो स्किल डेवलपमेंट कले आमर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छी डेमोग्राफिक डिविडेंड ना शुणिछ ना नहीं Yes, sir. यस द डेमोग्राफिक डिविडेंड जो अच्छी से डेमोग्राफिक डिविडेंड को टैप करिया पई हमको स्किल डेवलपमेंट दरकार तो स्किल डेवलपमेंट हेले धीरे धीरे इनइक्वालिटी इनकम बढ़िबो तापर इनइक्वालिटी कमिबो ठीक अछि कहार डाउट रहला क्विजनेट कर्व रे सो जदि पचारिबो क्विजनेट कर्व इज द रिलेशनशिप बिटवीन ओके ए पर कैपिटा इनकम माने कोन इकोनॉमिक ग्रोथ हेले पर कैपिटा इनकम बढ़िबो क्विजनेट कर्व इज द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी क्वेश्चन एमसीक्यू पढ़ी परीक्षा रे कला बेले जानि परिबो ठीक अछि नेक्स्ट सेशन ऑन इकोनॉमी तुम खाइ नथि बदि खाइ दियो नेक्स्ट सेशन रे वी विल स्टडी अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नेक्स्ट क्लास आज जहा क्लास रे पढ़ा हला कार के डाउट रहला डाउट सर जो स्टार्टिंग आपण कहले कि तीनटा थिंग अछि हमर जे प्रोडक्शन आ कंजम्पशन आ कैपिटल फॉर्मेशन हम जो Yes, सर्विस yes. प्रोवाइड होची तो सेटा तीनटा जाक सेक्टर रे जीवो माने प्रोडक्शन भी सर्विसटा यस कोच सी सर्विस जो कोच सपोज तुम माने ऑनलाइन एग्जाम के दे सब देइछो जाय कि केबे भी ऑनलाइन एग्जाम एनी आगे सर देइछो अच्छा तो से ऑनलाइन एग्जाम जो तुम दउछो से सॉफ्टवेयर डिजाइन करछि टीसीएस ठीक अछि जो माने नीट पीजी हो किंबा मूवी नीट पीजी दला नीट पीजी दला वाले भी सब टीसीएस ही एग्जाम करे मतलब नीट पीजी देथली तो एमबीबीएस एग्जाम भी नीट आम बेले तो एमबीबीएस एग्जाम पेन एंड पेपर होतला बट एबे ऑनलाइन हेगला सब एग्जाम प्राय ऑनलाइन हो जो टीसीएस जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करछि से कोन करूछ सपोज ओपीएससी गोटे ऑनलाइन एग्जाम करछि कि यूपीएससी गोटे ऑनलाइन एग्जाम करछि तो यूपीएससी टेंडर देला का गोटे कंपनी को टीसीएस कंप्लीटली ओपीएससी के यूपीएससी केवल क्वेश्चन सेट करे टीसीएस को दे देला टीसीएस क्वेश्चन सॉफ्टवेयर फीड कला पिलांगर एग्जाम कला रिजल्ट बाहर करके दे देला का यूपीएससी सो एठी सर्विस प्रोड्यूसर किए TCS. कंज्यूमर किए UPS. बस चला आ कोन एडोड सर्विस ना नहीं ए सर्विस ताको हायर कला किए यूपीएससी हायर कला हायर करके सेटा से कंज्यूम कला ता बदले ताको पे कला बुझी परलो आगे सर ठीक अछि चलो थैंक यू वेरी मच विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू